So here's our first theory, that is the James Lange theory. James and Lange, they were two different psychologists, and they proposed a theory which can be described. You can read the slides. I've uploaded the slides as well, so you can read them. But here is the depiction of their theory basically. What they say is that event होता है, मतलब event is whatever is triggering the emotion. They say कि event के बाद होता है arousal. Arousal is that physiological state आपकी body की जो होती है. Then they say that there is a third aspect called interpretation. And interpretation means that your body and your brain, it interprets the arousal. कि ये जो arousal हो रहा है आपकी body notice करती है, आपका brain notice करता है that there is an arousal state in the body and it must be a certain emotion. तो ये जो interpretation है, this is again an unconscious level, brain level पे होता है. This is your brain interpreting your body's arousal and telling you that because the body is aroused, so there must be an emotion. सही है? So look at this example. You're walking down a dark alley late at night. This is the context. Now you hear footsteps behind you. This is the event. कि आप अकेले जा रहे हो कहीं पर रात के टाइम पे and you hear footsteps behind you. That's it. अब क्या होना शुरू हो जाता है according to their theory. First of all, there is arousal. ठीक है? So जैसे ही आप footsteps सुनते हो, you begin to tremble, your heart beats faster and your breathing deepens. So this is the arousal state. आपके physiological response है. You notice these physiological changes and interpret them as your body's preparation for a fearful situation. This is the interpretation part. कि आपने, because you notice those physiological changes, मतलब your brain interprets them as your, like it's written here, your body's preparation for a fearful situation, which then makes you experience fear and you experience the last step, that is the emotion. Now this is their theory, but इस theory के अंदर बहुत सारी problems हैं. The first is that people can experience physiological arousal without having any emotion. For example, अगर हम exercise कर रहे होते हैं, okay, when you're running, या कोई भी ऐसा state हो जहाँ पे your heart rate is increasing, the body is in an arousal state, but uh, it's not because of any emotion, it's because of the physical activity. So if the brain is interpreting the body's arousal, तो फिर तो every time you run, every time आप exercise करते हो, आपकी body को कोई emotion generate करना चाहिए, but that doesn't happen. Secondly, the criticism is that physiological responses, they happen too quick, मतलब वो इतना quickly होता है, it takes some time as compared to uh, the experience of emotion. तो क्रिटिसिज्म ये है कि हम इमोशन इंस्टेंटली फील करते हैं, हमारी बॉडी को एक रिएक्शन जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो इफ वी बेस इट ऑन देयर थियरी, दे से कि पहले अराउजल हो जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन है, देन देयर इज इमोशन. सो इवन इफ इट्स लाइक मिली सेकेंड्स की टर्म में भी, इट मीन्स कि इमोशन को आते आते इतना टाइम लगना है, बट दैट डजंट हैपन. इट्स नॉट लाइक यू स्टार्ट फीलिंग बॉडीली चेंजेस एंड तब तक कुछ हो नहीं रहा, but then you suddenly feel कि अच्छा now I need to feel fearful. So that's again something that is critical in their theory, मतलब which is unexplainable. And thirdly ये है कि physiological arousal doesn't always result in मतलब the same emotion. जैसे मैंने शुरू में कहा कि every emotion generates a physiological arousal. fear में भी arousal है, excitement में भी है, anger में भी है, sadness में भी है. अगर हम कंपेयर करें, ज़्यादा अराउजल एंगर में होता है, फियर में होता है, एंजाइटी में होता है. ठीक है? सो हाउ कैन योर बॉडी डिफ्रेंशिएट कि ये जो अराउजल है ये फियर वाला अराउजल है या ये एंगर वाला अराउजल है या कुछ भी हो. सो it is like it becomes a little problematic कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि if your body is only interpreting the arousal then there is no way to differentiate. Then comes the next theory, which is the Cannon-Bard theory. Again, two psychologists. What their theory says is that they made a change. They say कि event होता है. Event में they say कि the brain, it sends the message simultaneously. It sends, for example, your brain is going to send the message to the sympathetic nervous system and the amygdala. जैसे ही एक event हुआ. So you will experience the arousal and the emotion simultaneously. So yes, let's look at the same example again. You're walking down a dark alley late at night. You hear footsteps behind you. Here's the event. You begin to tremble, heart beats faster, your breathing deepens,
At the same time as these physiological changes occur, you also experience the emotion of fear. So they're happening side by side according to them. एक event होता है और brain दोनों areas को एक साथ trigger कर देता है. ठीक है, अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि स्टिल वी डोंट नो हाउ डिफरेंट इमोशंस आर फेल्ट. दिस थियरी डजंट एक्सप्लेन why in this situation, for example, कि आप डार्क एली में रात को जा रहे हैं and your heart beats faster, why did you experience fear? Why not anger? Why not excitement? Why not nervousness? Why not any other emotion? Why specifically fear? वो वाली चीज इस theory में cover नहीं होती है. We'll skip this part because it was a video. The next theory is the Skacter-Singer theory. This is also known as the two-factor theory. यहाँ पर they've tried to modify those problems जो हमें last two theories में नजर आई. What they say is that after an event there's an arousal. Arousal के बाद ये कहते हैं reasoning होती है. अब इनका reasoning जो है वो शुरू वाली theory के interpretation से different है. With reasoning they say यहाँ पे you are doing the appraisal part. ठीक है, जो हमने शुरू में बात की थी कि cognitive appraisal का भी point है. It means how you are evaluating the situation around you. So they say that there is an element of reasoning. So when you notice that your heart beats faster, yeah, there is a physiological change in your body, you start to give reasons for it कि आसपास मेरे क्या हो रहा है, मैं किस situation में. So let's look at this example again. You hear footsteps behind you and you begin to tremble. All of these arousal part हो गया. Then upon noticing this arousal, you realize that it comes from the fact that you're walking down a dark alley by yourself and this behavior is dangerous. So you've appraised the situation, you have evaluated the situation and given a reason to yourself कि ये जो इस वक्त रात को अकेले एक अंधेरी जगह से गुजरना is not safe. ठीक है, it's a dangerous behavior. So if I'm hearing footsteps behind me, I should be scared. And then the emotion of fear is felt. So यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जो एक डिफरेंस ऑफ इमोशन वाला जो पार्ट था कि हम क्यों एक इमोशन फील करें एंड नॉट द अदर, वो तो उन्होंने केटर कर लिया, बट दिस स्टिल डज नॉट आंसर द क्वेश्चन और डज नॉट केटर द प्रॉब्लम ऑफ अराउजल बीइंग स्लोअर एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन. हमारी reasoning and all of that, even though it happens very soon, the emotion does not take time to feel, मतलब to arise. So वो अभी भी इसके अंदर मिसिंग है. Then there is the theory of Lazarus. Now what Lazarus does is he changes the sort of ये कहें कि sequence, okay? And what he says is that there is an event, then there is a thought, and now the thought is what is the cognitive appraisal part. कि आपने उस जो भी event होता है, what do you think about that event? And as soon as there is a thought, the brain will send a trigger to the emotion and the arousal parts of your brain. Okay, you need to react, and that is how a person feels emotion. So, same example: walking down a dark alley, you hear footsteps behind you, and you think it may be a mugger. ठीक है, सो यहाँ पर एक थॉट आ गई कि आई एम थिंकिंग दैट इट्स डेंजरस, इट मे बी अ मगर, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे हार्म करना चाह रहा है. दिस थॉट is what starts to make you fearful, and this also creates an physiological arousal जहाँ पर आपकी हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाती है and your breathing deepens and you're fearful. ठीक है, so this theory sort of covers the problems that we had with the previous ones कि जब तक thought नहीं आएगी तब तक emotion नहीं होगा. So if you don't, for example, if you don't think of anything as like जैसे footsteps आप सुनते हो, if the thought is that it may be a cat, ठीक है, तो maybe you won't feel that emotion and you won't feel the arousal. So what Lazarus theory says is that the thought is an important component. जब तक thought नहीं आएगा तब तक हम emotion feel नहीं कर सकते. And lastly, the last theory that we have is the facial feedback theory. And according to this theory, our facial expression, our muscles that we move in our face, that determines the kind of emotion that we have. Now, this theory is based on certain experiments that were carried out previously. उसमें उन्होंने ये किया था कि they had people walk into मतलब उन्होंने experimental setup ऐसा था कि there was one group जिनको तीन ग्रुप सॉर्ट ऑफ उन्होंने बनाए हुए थे. तीनों ग्रुप को एक ही मूवी दिखाई थी which was a very neutral kind of a video clip. ठीक है, it was a short movie, informative थी, it wasn't हैप्पी नहीं थी, सैड नहीं थी, जस्ट वेरी न्यूट्रल. जिससे मूड जो है ना वो अच्छा बुरा उसकी वजह से नहीं हो सकता, इंफॉर्मेटिव से वीडियो थी.
तीनों को सेम वीडियो दिखाई थी, सेम तीनों ग्रुप्स को सेम ड्यूरेशन के लिए। तीनों ग्रुप के अंदर फर्क सिर्फ ये था कि फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने कहा कि वो अपने दांतों के बीच में एक पेंसिल जैसी चीज जो है ना वो उसको पकड़ के रखें between your teeth and don't let the lips touch. ठीक है, so if you try to do that, pick something up, even if you just try to like bite your finger, अगर आप lips को touch किए बगैर, मतलब if you don't touch the your finger and you leave your mouth open but bite your finger, so you will see that जो आपके facial muscles pull हो रहे हैं, they are similar to the muscles that get pulled or get contracted when you are smiling. ठीक है, so they made the people sit in a position of a smile without telling them to smile. So only their facial muscles were moved because of that pencil that they were holding between their teeth. The second group were asked to have a frown on their face. ठीक है, उन्होंने कहा कि अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना उसको आप एज अ फ्राउन करें, मतलब फ्राउन इज लाइक ड्रूपी फेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बस अपना जो लिप्स है ना वो फ्राउन करें। तो फ्राउन इज समथिंग जो कि सैडनेस में होती है। अगेन दे डिड नॉट आस्क देम टू मेक अ सैड फेस, दे जस्ट सेड अपने लिप्स को जो है ना पुट इट इन अ फ्राउनिंग पोजिशन। And the third group was not asked to do anything. उन्होंने as it is movie देखी। At the end of that movie, that short movie, उन्होंने तीनों ग्रुप्स के जितने लोग थे उन सब से कहा कि इस मूवी को रेट करें on a scale of 1 to 10. How much did you like it? देखा ये क्या कि जो हैप्पी ग्रुप था, हैप्पी ग्रुप बाय द मतलब जो जिनको स्माइल जिनके फेस पे था, दे रेटेड द मूवी एज they gave the movie a much higher rating as compared to the other two groups. और जो सैड ग्रुप था उन्होंने उस मूवी को सबसे लो रेटिंग दी। ठीक है, तो जो न्यूट्रल ग्रुप था उनकी रेटिंग अगर सपोज हम करें कि बहुत न्यूट्रल सी रेटिंग थी, तो जिनके फेस पे स्माइल थी they rated it higher, and the researchers they concluded that because there was a smile on their face, it releases those hormones जैसे endorphins हैं जो हमारा dopamine system है that gets activated, and it releases the hormones that make you feel happier, and when you feel happy you like things more, आपको चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। So which is why that neutral movie they liked it better than others because they had a smile on their face and it made them feel good. सिमिलरली सैड के लिए उन्होंने यही कहा कि फेशियल मसल्स जब सैड के होते हैं तो फिर हमारी जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है, दे डोंट गेट रिलीज्ड इवन इफ यू वांट टू, एंड यू एक्चुअली फील लाइक लोअर, आप सैड फील होना शुरू हो जाते हो, विच इज व्हाई दे गिव इट अ लोअर रेटिंग देन द न्यूट्रल एंड द हैप्पी ग्रुप, एंड द न्यूट्रल ग्रुप जस्ट गिव मतलब जो उनकी रेगुलर रेटिंग है। तो दिस वाज वन ऑफ द स्टडीज जो इस चीज को प्रूव कर रही थी कि आपका जो फेशियल मसल्स हैं उनका फीडबैक बहुत जरूरी होता है, लाइक योर ब्रेन इंटरप्रेट्स द मसल्स ऑफ योर फेस टू डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ इमोशन यू आर फीलिंग, एंड इसीलिए हम कहते हैं जैसे एंगर में क्लेंच्ड अगर आपकी मसल्स हैं, कहीं पे मसल्स टेंस्ड हैं, कहीं पे मसल्स रिलैक्स्ड हैं, दैट इज हाउ योर ब्रेन आइडेंटिफाइज कि सर्टेन इमोशन इज बीइंग फेल्ट, एंड दैट इज हाउ यू एंड अप फीलिंग दैट सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन। Now again, this is just one theory. This is different from the rest because they've not incorporated thought process या arousal या ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं है. But this is another theory जो कि accepted है, मतलब हम कह सकते हैं to some extent it does hold true because हमारे facial contractions और muscle के relaxation से हमारे emotions differ जरूर कर रहे होते हैं. ठीक है, so these are the 5 theories that we have discussed, and here is the depiction. ठीक है, so facial changes and then there is an emotion. And the example you can say, walking down a dark alley, you hear footsteps behind you, eyes widen, teeth clench, and your brain interpret these facial changes as the expression of fear. Therefore, you experience the emotion of fear. ठीक है, तो यहाँ पर fear की वजह से आपके जो facial expressions हैं वो change हो रहे हैं, therefore you feel fear. So this was the last theory that we are going to talk about, and that is the end of today's lecture. So in conclusion, if we see that emotions, they are universally felt, everybody feels emotion. Not feeling emotion is not normal. It is something that it means कि the emotions are being suppressed rather than ये कहना कि emotion है ही नहीं. ठीक है, emotion suppress हो रहा है. Different people react differently because उनका जो appraisal है, the way they evaluate the situation, that is different, changes from person to person. And every person has a different personality जिसकी वजह से भी हमारे emotional expressions change होते हैं. ठीक है.